the expected time is 2 hours, 3 hours, 5 hours. It will keep posting you. Get it? All security incident also, severity 1 have bigger impact. They will take all the team for further faster resolution. So any severity incident 1 has been triggered, you create the service now ticket severity 1, inform to the incident management team, manager, incident manager, everyone will take all the team call, resolve this incident in a faster way. Get your mind? Okay, got it? So that is अब थोड़ा सा सर दर्द हो गया है, 12 बज गए आज. So what I was telling is, so that's the responsibility of L1, L2, L3, right? Being a L1, people, listen to me here. Being a L1, people who are fresher, do not ask me to share the fresher resume. What do you have to mention? Let me tell you that. You mentioned already intensive for 8 to 1 month. You mentioned that working for one of the client, being a part of SIM expert, not only have taken training. In our website, we have written services also, right? So we are providing cyber security services also to the client. Okay, you can tell that you have been hired, you completed the training, and you have been hired as an internship to complete 8-month training. You are working on the real-time project only. One of the company based out in Saudi Arabia. कोई भी नाम सर्च कर लो, डिफरेंट डिफरेंट नेम है ना, सऊदी अरेबिया कोई भी कंपनी कर लो, और बैंकिंग रिलेटेड क्लाइंट, कोई बैंक देख लो, कोई भी बैंकिंग रिलेटेड क्लाइंट. Do not tell the company name until they do not ask, or you can tell that we have signed the NDA, non-disclosure agreement. We are not supposed to disclose the client name. अगर वो पीछे बड़ा पूछता है, नहीं बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, आर्ग्यूमेंट करता है, तो कोई भी कंपनी देख लो, है ना, और नाम बता दो. Nobody knows that, nobody knows it. कोई भी एक कंपनी XYZ देख लो, नाम बता दो उसका. ठीक है, working with this client, working as an intern, right? But it's a kind of but we work in the real-time project, and these all activities I was doing. You should not that fresher means fresher का resume क्या होगा फिर? Somebody ping me, sir, please send the fresher resume. You have not sent the fresher resume. Please send me the fresher resume. तो ये fresher resume में तो कुछ लिखोगे ही नहीं, फिर academic लिखोगे क्या? fresher resume दूं आपको. If you are not supposed to write this step that you are handling this project, then what you are going to write? In training only, you learn this, that's all. Or you write only academic, okay, 70% on this, 30% on this, 90% on this. Then what fresher resume you need, right? So you have to write responsibility of L1, and what else you understood from device integration perspective or L2 perspective, those also you can write it. You cannot carry that, okay, but we learn it, and we are doing it. It's a small project, so we got the responsibility to do all those. तो आपको लिखना है, you're working as an intern, but you are handling the client, real-time project. SIM expert, how many projects? They have 4 projects. People who are writing on the intern, right? They work in SIM as an intern, SIM expert. They can write. They have how many projects they have. SIM expert is a general question they may ask, right? How many projects? They have around 3 to 4 projects. They are having around 3 to 4 projects. One of the project belongs to Saudi Arabia, on which I am working for. So here we got training. So you can say some people who are good in doing the training, they have taken as an intern. Not everybody doing intern, but some people during the training time, they got to those are good. They have observed for internship, and all are working for. So L1, L2, L3 admin, all we have here. Some people are intern who got this opportunity. Get me? Being intern, you are doing this, all same. You are doing this all day. मैंने आपको L1 की responsibility बता दी. Apart from that, what else you need? मेरा video watch, this video watch again. What I ask you, what L1 is doing. Take this point and resume already written. Those points already written. If some point you do not know, because one resume only we have created. Your admin also, L2 also, L3 also same. So some point that you do not know, remove those points. Yes or no? If you know it, you can explain it. Even being an intern also, being an L1 also, you can do that. Right? So you can write on the resume, being an L1. Get in mind? That is one thing. Splunk के पॉइंट मैं आपको भेज दूंगा लिख के एक बार, अब थोड़ा टाइम नहीं है. मैं Splunk के पॉइंट I'll write it some basic perspective what you can mention on the Splunk, right? If you know already all this thing, then only you write some, maybe it's a couple of more points जो आपको आता है, what you explain only at those points.
does not know, even I explain you, but you do not understand or you cannot explain, do not write it. Any point in a resume, you do not have to copy and paste. You know that what you have writing in a resume, you know it. Those point only you have to write. Get a point? Okay. So another thing is like that is L1 perspective. L2 perspective, L1, L2. अब L1 का क्लास भी जो मॉनिटरिंग भी करते हैं ना, L1 to L2 वाले monitoring also you do. Apart from that, admin task also you do that you can monitor. Right? So Splunk perspective, अगर आपको डिवाइस इंटीग्रेशन समझ में आया है विंडोज और लिनक्स का या फायरवॉल का, you can write device integration for L2 perspective. Or you can mention that you are working in the two project. One project you are working on the ARC side for all admin activities, but Splunk you have monitoring activities only. If you understood only monitoring, you know the architecture, you know everything, right? Apart from the monitoring activity, you raise the incident and everything you do, right? Some of the point device integration all I'll add you so that you can add it if you understand and if you can explain it. Cluster only. भैया ये वाला in Splunk in the company will have cluster environment only. Get it? You will not have this one instances. That is only for small scale companies. Big company you will have cluster only. Get it? तो ये तो मैं आपको बता दूंगा किस कंपनी में कितने सर्च है, किसने वो है, कितना EPS है. हाँ. Dedicated. For that was particular tool we are using particular. हाँ, मेरे को डेडिकेटेड नहीं बताना है, शेयर तो बताना है. बोलना in our company we have shared SOC also, but I am working for the dedicated client. In our company the MSSP, managed security service provider, but for me I am working for dedicated client. I have 2 dedicated client. अगर आपको Splunk experience mention करना है, 2 dedicated client, सिर्फ साइड तो एक ही क्लाइंट है ना. तो आपको जितना समझ में आया उसके हिसाब से यू कैन ट्राई विद दैट. दो क्लाइंट बोलना पड़ेगा डेडिकेटेड. हाँ, 2 डेडिकेटेड मींस सीपी मॉडल है, सीपीई. हम लोग डेडिकेटेड नहीं बोलेंगे, सीपीई मॉडल बोलेंगे. फिर डेडिकेटेड बोलेंगे तो डेडिकेटेड सी योकनी है 2 क्लाइंट, राइट. अगर आप एक क्लाइंट बोलोगे तो आप बोलोगे डेडिकेटेड भी बना रखी, बट यू आर रखिंग 2 क्लाइंट, यू कैन नॉट कॉल एट डेडिकेटेड, यू कैन कॉल सीपीई मॉडल. मींस सीपी मॉडल कस्टमर प्रीमाइस इक्विपमेंट, मींस those ESM and logger and all are customer owned, right? We are monitoring from here. So I'm working for two customer, but those are CPE model. आप dedicated नहीं बोल सकते. Dedicated मतलब एक ही client में work करोगे dedicated होगा तो, है ना? Then only you are dedicated. Means single client you are working. But if you are writing 2 SIM tool means not dedicated. It's a CPE model hosted on the customer end. We are taking the remote access and we are monitoring here. CPE model, customer premises equipment. CPE. हाँ सर, आजकल बहुत ज्यादा EDR पूछ रहे हैं, इन पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स. मतलब एवरी इंटरव्यू में EDR का थोड़ा सा आप रिव्यू कर लो. मैं EDR के लिए और प्लान करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से एक्सप्लेन भी करूं क्लास में. सो EDR, XDR, MDR है ना, ये थोड़ा नए टूल है अभी, तो थोड़ा एक्सप्लोर करो. इंटरनेट में हर चीज मिल जाएगा आपको. थोड़ा एक्सप्लेन थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली. क्राउड स्ट्राइक EDR है और कार्बन सेमेंटिक का भी EDR है. हाँ, ऑल आर EDR. तो नॉलेज इज इनफ. यू आर नॉट वर्किंग बट यू शुड हैव नॉलेज, राइट. मैं वही बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग के अलावा भी देयर आर समथिंग दैट यू विल गेट इट दैट इवन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, बट इट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट नो इट, राइट. तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, बैकग्राउंड आपको फाउंडेशन आपको क्रिएट हो गया है. समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड हियर, नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यू शुड अंडरस्टैंड इट. Okay, but if you're not understanding it, I'll plan to create a video in YouTube because that is the most frequently asked topic nowadays. आजकल सर I thought last month हाँ what? सर आजकल सिर्फ स्टार्टअप कंपनी अप्रोच कर रही है, जैसे कि साइबर नेक्स्ट, साइबर टाइप के छोटे छोटे जो कंपनियां वही अप्रोच कर रही हैं आजकल. हमें मतलब उन्हीं का कॉल आता है, उन्हीं का इंटरव्यू. तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो, आपकी सैलरी कम है और आप एक्सपीरियंस लगा छोटी कंपनी का रहे हो, बड़ी कंपनी से बड़े बड़े लोग देखते हैं कभी कभी, है ना. तो स्टार्टअप कंपनी का कम सैलरी में काम हो जाता है, कम नोटिस पीरियड है आपका, तो स्टार्टअप कंपनी अप्रोच है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. काम सीखने का ज्यादा मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सी यू हैव टू गेट अ ब्रेक. आइदर बिगर कंपनी और स्मॉलर कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. क्योंकि अभी मतलब 2 दिन पहले कॉल आया था एक साइबर फोर्ट डीजी से चेन्नई में है,
तो उन्होंने हाँ बोला था कि आके आपको यहाँ मतलब लोकेशन पे आना पड़ेगा, तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। उन्होंने नहीं, ऑफर कोई किया है। दिक्कत नहीं है। अगर देखो आप वर्क कर रहे हो ऑलरेडी, आपको अच्छा पैकेज है, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो छोटी कंपनी है ना। लेकिन आपका जॉब नहीं है ऑलरेडी सिक्योरिटी में, दूसरी फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, तो फिर क्या सोचने की जरूरत है भाई। भाई आपको जॉब, आपके इफ यू डोंट हैव जॉब इटसेल्फ, ये छोटी कंपनी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जॉब मिल रहा है ना। वर्क फॉर 1 ईयर, you can say you will get big money once you have real time experience and देखो जॉब जब रहता है तो टेंशन नहीं रहती, 1 महीना 2 महीने 3 महीने में मिले। अभी आपको जॉब चाहिए, है कि नहीं? यू हैव प्रेशर, you need a job. Once you get a job, you are earning money already, right? Then you don't have pressure. फिर 1-2 महीना कभी कॉल आए, जरूरी 1 महीने कॉल आए, if not today, tomorrow it will come, next month it will come, next month it will come, then select the company. You have the option to select. Now you don't have option to select, you don't have a preference, right? First of all, whatever company it is, just check it out, the reviews and everything, and join the company. मिट्रे अटैक पे थोड़ा सा बताइए ना। क्या? माइट्रे अटैक। हाँ, एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। देखो मैं थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ, वो करने का नहीं, अपन कर नहीं सकते, बीइंग विदाउट एडमिन यू कैन नॉट डू इट, बट एक ऑप्शन है करने को, मैं दिखा देता हूँ। मिट्रे साइबर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मिट्रे बहुत चल रहा है, तो मिट्रे आपको इंपॉर्टेंट है लर्न करना। मिट्रे का मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, आपको क्लास में नहीं भेजा ना, अगले क्लास में नहीं भेजा ना, तो मैं आई हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस बैच। हाँ मिट्रे, तो आई विल शेयर यू द वीडियो। मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट आपको कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। वंस यू लर्न, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। आई विल शेयर द वीडियो फ्रॉम प्रीवियस बैच। इंटरव्यू में हम लोग से मतलब मुझसे पूछते हैं कि मतलब मिट्रे अटैक आता है कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ, मतलब कि जो भी यूट्यूब ये वगैरह मिट्रे से अटैक पढ़ा है। आता नहीं है भाई, मिट्रे अटैक थोड़ी है, वही मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। मिट्रे इज नॉट अटैक, टेक्निक इट्स है। द फ्रेमवर्क। हाँ मतलब आप मिट्रे पहले कभी पहले फ्रेमवर्क आपने ये किया है, इम्प्लीमेंट किया है, जब आप अपना इंसिडेंट चैनल मतलब इंसिडेंट आप ये कर रहे थे, तो मैंने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया, पर मुझे साउंड नॉलेज है इसका। क्या नॉलेज है आपको? साउंड नॉलेज मतलब थियोरेटिकल नॉलेज। साउंड नॉलेज मतलब थ्योरेटिकल नहीं होता, साउंड मतलब जो हल्ला मचा दे। साउंड नॉलेज मतलब इतना नॉलेज है आपको, हल्ला मचा दे, मतलब इतना ज्यादा नॉलेज है आपको, पूरा नॉलेज है। साउंड नॉलेज मतलब हैविंग वेरी गुड नॉलेज। अब आपको पता नहीं कि देखो आपको यही तो मिट्रे अटैक की फ्रेमवर्क है, और आप बोल रहे हो साउंड नॉलेज है, तो यहां से तो गड़बड़ी होती है ना भाई, मीन्स यूर लाइंग। देखो हमको वही बोलना है जो हमसे आता है। हाँ मैंने आपको बताया, उस वीडियो में भेजूंगा। देखो माइट, अब चल मैं एक्चुअली मेरे को ना एनर्जी बहुत कम हो गई है, 12 o'clock हो गया है और मेरा हेडेक हो गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक नहीं, मुझे कुछ खाना ही पड़ेगा जाके। तो व्हाट आई एम सेइंग इज मैंने उसमें वीडियो बताया है। अब मैं थोड़ा आपको यू हियर अबाउट साइबर किल चेन। Cyber kill chain and Mitre both are like both covers how attacker plans and execute his motive. Cyber kill chain का फर्स्ट स्टेप क्या है? Reconnaissance. Reconnaissance means attacker will collect the information, select the target, and collect the information about the target through some social media, social engineering, port scanning. Yes or no? So cyber kill chain and Mitre is a framework, are the framework which define from cyber kill chain how many stages we have? 7, and Mitre 14. 14। So cyber kill explains the attacker task one by steps, how attacker starts from reconnaissance to the कमांड एंड कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन, अचीव द मोटिव। मतलब स्टार्टिंग में कैसे प्लान करेगा और एग्जीक्यूट कैसे करेगा एट द एंड। इट हैज बीन डिवाइडेड ऑन द 7 स्टेप्स। पहला क्या है? रिकॉग्निशन। सेकंड इन साइबर किल चेन वेपनाइजेशन, मींस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
it will select the target recognition step, collect the target information. ऐसा ना सोशल मीडिया कौन सी कंपनी है, क्या क्या आईपी एड्रेस हैं, what are the users name, some user name, what are the port has been opened through port scanning activity, host scan activities, what are the vulnerabilities that they have. Then weapon create करेगा, maybe malware through email or through web. Yes or no? That is called weaponization. So these steps one by one, right? How to successful command and control and execute my plan. It has been divided in the 7 steps that we call as साइबर किस में क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो स्टेजेस बोलते हैं, 7 stages, right? We call as stages. So whole strategy of the attacker, planning and execution has been divided in 7 stages. क्या क्या है आप पढ़ लो, है ना, क्या क्या stages हैं, and you can learn more about it in particular stages. What are the ways of doing it? कौन कौन स्टेज में क्या होता है. तो साइबर किल चेन help us to identify how mature is our security infrastructure. अगर let's say for recognition step means 7 stages, means we have 7 stages to catch the attacker successfully. मगर 7 में से अगर हम एक में भी सक्सेस हो गए तो अटैकर विल नॉट बी सक्सेसफुल. Yes or no? Let's say attacker is collecting customer information, reaching out to you on LinkedIn to get some information, doing the port scanning, host scanning. That time we attend port scanning activity happening this particular IP. We can block it. We can ask ISP block it IP on their end. Means attacker ने start ही किया था, हमने block कर दिया. Weaponization. So malware came, email gateway block it. So we can plan it out for which stage of cyber kill chain, which devices we have, or what strategy we have to make our network secure. Remind, we can have devices from SIM perspective. We may have various rules to detect. देखो अगर पोर्ट स्कैनिंग हुआ तो साइबर किल चेन रोल क्रिएट के पोर्ट स्कैन टू बी डिटेक्टेड. तो कौन सा स्टेज होगा पोर्ट साइबर किल चेन का? फर्स्ट स्टेज रिकॉग्निशन. सो वील अंडरस्टैंड इट मे नॉट बी हाई सिक्योरिटी, इट्स द रिकॉग्निशन. साइबर किल चेन मैपिंग एंड मिट्री मैपिंग भी होती है सिम के साथ, एंड दैट इज हाउ यू इंप्लीमेंट मिट्री मैपिंग, मिट्री फ्रेमवर्क. सिम में भी हम मिट्री एंड साइबर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करते हैं. साइबर किल चेन एंड मिट्री फ्रेमवर्क हैज द सेम मोटिव, बट साइबर किल चेन थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा कम एरिया को कवर करता है, जबकि द मिट्री इज एक्सपांशन ऑफ साइबर किल चेन. तो पूरा अटैकर कमांड मींस प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, it has divided in just 7 stages, but मिट्री has divided in 14 stages. means छोटे छोटे को more focus किया उसने मिट्री ने. yes or no? So your concept is clear, right? Just a framework what attacker follows. We can check how mature is our network, what are security devices we have to block those kind of activities when we attacker reach on that particular stages, and from SIM perspective what rule we have to detect such attacker activity on particular stage. So particular rule will create for port scanning and will map with it's a recognition phase of cyber kill chain, it's a weaponization stage of cyber kill chain, it's the execution stage of cyber kill chain. Previous to mitre we used to follow the cyber kill chain, but once mitre introduced, once people understood, they started focusing much on mitre framework. मिट्रे अटैक, इसलिए फोर्स अटैक है मिट्रे, लाइक ब्रूट फोर्स अटैक एंड like SQL injection attack. Mitre is also attack, but mitre is not an attack. Why they are writing attack? It's not an attack, but a short form of the name
A means adversary, T means tactic, T means techniques, and common knowledge. CK means common knowledge. Get mind? Cyber kill chain is only for enterprise network. However, nowadays, not only enterprise, but mobile network also you have. Yes or no? So the MITRE framework has been created considering the enterprise network, mobile network, और एक और है यार मेरे को याद भूल गया अभी ध्यान से निकल गया थर्ड वाला. मोस्टली वी आर द पार्ट ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क. मोबाइल सिक्योरिटी में कैसे अटैक होता है, क्या स्टडी प्लान कर, दैट आल्सो डिफाइंड बाय MITRE. And we follow the enterprise framework here. Enterprise we have 14 stages that we call as tactics. साइबर किल में स्टेजेस बोलते हैं ना. Here we have techniques. Technique stages means what attacker want to achieve, means objective. These are tactic means objective of the attacker. In which stages what objective attacker is going to achieve. These are 14. आप वीडियो वॉच करना, मैं वीडियो में दिखाया हुआ हूं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं अभी. आफ्टर दिस any video you will see, any document you will read, you will understand. Your concept is clear. In those 14 stages, we call as technique. In देखो, first of all, one reason to select MITRE framework compared to cyber kill chain is MITRE framework is more deep down, because instead of 7 steps you have here is 14, means more deep down. One thing that we call as stages, right? Here we call as tactic. Tactic is nothing but the objective. In various stages, we have different objective, recognition. These are the tactic means objective of the attacker, right? So on the cyber kill chain, only objective is written. Reconnaissance, attacker will collect the information. But what are the ways to do the reconnaissance, to collect the information? It is not written on cyber kill chain. That is a drawback. Cyber kill chain that is reconnaissance, an attacker will collect the information. But what are the various ways using which attacker may collect the information is not defined by the cyber kill chain. It is defined by the MITRE. In every tactic, there are techniques. We call it ATT. Adversary means attacker. Adversary means attacker. We use second word, we call adversary. Adversary means attacker. Attacker technique, tactics means attacker की tactics क्या है, क्या objective है attacker का. Techniques, for particular objective, what are different techniques? Reconnaissance, what are the way of doing the techniques to identify the information? That is the techniques. And common knowledge, documenting the attacker techniques and tactics called as common knowledge. That's the MITRE framework. MITRE ADT means MITRE is a company organization name. We call it MITRE. MITRE ऐसा कोई technical word नहीं है. It's a non-profit organization based out in America. Its name is MITRE. MITRE has introduced this model framework. That's why we call it MITRE's attack or MITRE ADT and CK framework or MITRE attack framework. Adversary, attacker, tactics, objective, and techniques. Attackers, adversary, tactic, techniques, and common documentation of this is called as ATT, MITRE attack framework. Every tactics, the 14 is the tactics, 14 are the tactics. Every techniques, there are techniques. Every tactics, there are multiple techniques. Means अगर recognition है, तो what are the ways techniques attacker can use to fulfill the particular tactic. Right? So now you have 14 stages. Now instead of 7, you have 14 stages to detect and to take the action against the attacker. Get your mind? Now you have 14 chances. And in 14 chances, you have different techniques also. Now you can see how mature is your network. भैया 14 stages हैं. Every 14 tactics you have separate techniques. भैया अगर अटैकर ने ये टेक्निक यूज किया इस टेक्निक में, let's say reconnaissance, if attacker use this technique, what are the security devices we have to ensure that our network is protected with this technique?
Another technique, what is security devices we have? This technique, what is security devices we have? What is our approach? If attacker use this technique to achieve his motive, to achieve his tactic. क्या रिमाइंड? जबकि साइबर किल में ये नहीं था. साइबर किल ने ब्रॉडली बोल दिया कि भैया रिकॉग्नाइजेंस है, अटैकर विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, बट हाउ अटैकर इज गोइंग टू कलेक्ट, व्हाट आर द वेज फॉर द अटैकर टू डिटेक्ट इट, it has not explained. That's the reason most of the companies are relying on Mitre attack framework instead of cyber kill chain. So now how Mitre mapping will happen? Let's say port scanning is the reconnaissance tactic, right? And now which technique? Under organization, which technique that also you can map. So once trail will trigger, you'll get to know Mitre mapping also. It belongs to which tactic of Mitre and which technique. That is called as Mitre mapping. So understand कि भैया अटैकर कौन से स्टेज में आ चुका है. If it is command and control, attack alert have been triggered and it belongs to command and control tactic. भैया मतलब अटैकर ऑलरेडी आ चुका है, some system has been already compromised. Attacker trying to create the backdoor now. It's a command and control. Yes or no? So we'll come to know this. The incident is high priority because attacker is already inside. So every rule nowadays we may do the Mitre mapping to identify, and we can follow the Mitre attack framework to ensure that our network is protected. We have all the ways that attacker use. We have security tools. We have the process to detect it. That is how Mitre is important. Understand, right? Understood? Why Mitre? Why Mitre is required? To identify how secure is our network, how secure is digital network, and what are the strategy planning security tool we have to take particular technique and particular tactic and techniques under those. But we cannot always rely on Mitre. भैया अटैकर बहुत इंटेलिजेंट हैं. You cannot say that we have enough rule following all the stage of Mitre and we have all security devices for every tactic and technique on the Mitre. Remind, still you cannot say that your system is secure. Attacker may follow some other process which is not a part of, may follow some other technique, may create some other technique which is not a part of Mitre. Still your network is prone to be compromised. And also, attacker may not use all the tactics step by step. Attacker may jump the tactics. Recognition के बाद directly दूसरे दो को jump करके, maybe he found the way to skip those two tactics, those two stages, and directly jump for 5th or 6th stages. Means tactics directly, right? So it may also happen. But बहुत काफी Mitre helps a lot to cybersecurity companies or to companies, IT companies which have IT infrastructure. Mitre helps a lot. एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो गया ना यार. अभी आपको पता नहीं था कौन सी डिवाइस लगाएं, कहां ना लगाएं. It's very easy for you to identify where is the loophole, where you have weaknesses. Remind, it helps a lot. What is the difference between cyber kill chain and Mitre attack? Now you can understand. If you go through the document now, go through the Mitre, what is Mitre, what is cyber kill, you're going to easily identify now what is the difference. Sometimes question asks, what is the difference between the cyber kill chain and Mitre attack? कई लोग तो समझते नहीं Mitre अटैक है कि फ्रेमवर्क है. जो लोगों ने पढ़ा नहीं, एक तो Mitre आप पढ़ोगे, बता रहा हूं आपको, समझोगे ही नहीं. If I would not have explained you this. If you read the document, वीडियो भी देख लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा Mitre है क्या. Some people must have tried it. मैं आपको होमवर्क भी दिया था, है ना. आपको समझ में ही नहीं आया वो है क्या, है कि नहीं. देखो इतना सारा रीड करने के लिए है आपको Mitre में कि some majority of people will not understand it. Excuse me, sir. Yes. Sir, as Mitre attack is going on by an attacker, to stop it, we can have an example of traffic towards Trojan ports and malware. We can say to interviewer, this is our approach, a simple approach to stop Mitre framework to implement it. अरे ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो गलत बोल रहे हो आप. So this is not right. You are trying to stop Mitre attack. Mitre is not an attack first. Yes sir, वो framework जो है ना, उस framework में जो हम एक
इम्प्लीमेंटेशन उससे लेके मतलब उससे गाइडेंस लेके जो हम एक रूल्स और वो सब क्रिएट कर रहे हैं उसके अंडर में ये एक आ सकता है ना कि हाँ हाँ, उससे लेट मी हम टेल यू दैट. चलो मैं प्रोबब्ली बता देता हूँ. If I ask what is Mitre framework, what is Mitre attack, right? So you can explain this way. Mitre attack is a framework. Mitre attack is a framework. First of all, Mitre is a non-profit organization based on America. It has created a framework which cybersecurity people can follow to ensure that they have proper process, proper tool to detect any suspicious activity, any attack, right? And attack stand for Mitre attack stand for adversary, tactic, technique, and common knowledge. So Mitre has focus mostly on three parameters. One is enterprise network, another is mobile network, और तीसरा एक और कुछ है मुझे याद नहीं है. OTT है शायद, IoT है शायद, Internet of Things nowadays. Internet of Things I think third focus. From enterprise IoT है ना. From for enterprise network, because we are working on enterprise network, enterprise perspective, they have 14 tactics. So Mitre framework actually defines how attacker plan, execute, and achieve his motive. It's end-to-end stages, under 14 stages on the enterprise network that we call as tactics. Mitre framework define how achiever start, plan, and execute his motive under these 14 techniques. And what are the tactics and what are the various techniques to achieve particular tactic, motive, objective is called as technique. Using which we can evaluate how mature is our network, whether we are secure, what are the various tools, technologies, process we have to detect the attempt of the attacker on particular tactics and particular technique. Based on that, from SIM perspective, we can have various rules. For example, port scanning activity is under reconnaissance stage of recognition tactic of Mitre framework. You can check it out. I don't remember under which technique it is coming to, right? So if you do on the Google, right, from SIM perspective, what are the various rules and coming on the which techniques? If you go on the Splunk go on the configuration, goes on the use case library, right? On that you will have various rules and check it have Mitre mapping also. You can check it out which rule belongs to which technique and which tactic. Or you can search on the Google also SIM use cases based on the Mitre framework. You will get it. So we can give some example to the interviewer. Let's say this activity belongs to this particular Mitre technique and this particular Mitre technique. ये वीडियो वापस वॉच करो, अंडरस्टैंड इट, देन गूगल इट, गेट फुल नॉलेज कैसे एक्सप्लेन करना है. ओके, गॉट इट. तो लॉगर ओवरव्यू का वीडियो भेजा था, उसमें है लॉगर का, है ना? Hello sir, this is Naresh. Yes. Sir, how many days we can access the watching the videos? Videos you will have 1.5 month access from now, and 1.5 month lab access you will also have, right? Maximum if 1.5 month is not enough, I'll be extending you for 2 months. Lab and video access both. Thank you. Video access, I am not giving lifetime access because I have to. It's a very secure channel. People cannot download how many times they can watch everything. You can control. It's very secure channel. I have to pay per GB basis. Per GB watch I have to pay 25 rupees per GB because of security of this channel, right? So that's a limitation, and I have my own limitation. People will start sharing it if it is long time. So multiple limitations. It's been 7 years. I'm giving this much of access also. So I believe that everybody will question why you are not giving lifetime access. That is the reason. I believe that since it's been 3 months, right? And since at least 1 or 2 months, I have shared the recording to you. 2 months is more than enough. You cannot learn in 2 months, you cannot learn in lifetime also. I have several training. So whatever training you watch, have you watched it again? You have not completed the same training also. And will you again watch same training? भैया लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं. We have many things in your life to learn. You cannot just say भैया lifetime access दे दो. ये एक ही चीज को watch करना है क्या आपको हमेशा?
You have to learn new technology, right? New things you have in life that you have to learn. People are unable to learn new technology. Here they do not get time. Will you learn the whole time same technology? No, right? If 2 months is not sufficient for you, next 2 months means it's very difficult for you. You have already document also, right? Everything is written on a document and copy. That's more than enough. You'll have lab access for another 2 months. Within 4 months now, right? Nobody will give. Check everywhere if anybody gives this much of lab access. First thing, they will not have also, and second thing, they will not give this much also. One and a half month. Okay, मैं आपको थोड़ा वो सैलरी नेगोशिएशन से सर वो थोड़ा एक मिनट हाँ बोले ESM वायरस हाँ इसके लिए मालवेयर का मैंने एसओपी भेजा है आपको एसओपी भेजा है डिटेक्ट हुआ तो क्वारंटाइन हुआ क्या नहीं हुआ क्या वो देखो एक बार पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है मालवेयर डिटेक्ट हुआ अगर इफ यू गॉट द ईमेल मालवेयर डिटेक्टेड सेम इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस मैंने आपको लास्ट मंथ शेयर किया वापस शेयर कर दूंगा उसमें मैंने पूरा ग्राफ बना के पूरा टोपोलॉजी बना के भेजा है रोल ट्रिगर आपको क्या लिखना है क्वारंटाइन हुआ अगर हुआ तो क्लोजेस्ट फॉल्स नहीं हुआ क्वारंटाइन अगर लेफ्ट अलोन है तो क्या करना है डेस्कटॉप ऐसा हुआ तो क्या करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप टोपोलॉजी है इसमें लेफ्ट अलोन होता है लेफ्ट अलोन हाँ सैलरी पर बेटे क्या बोल रहे पूछो हाँ नेगोशिएशन सर कैसे करना है जैसे उनका कॉल आता है ना देखो तो नेगोशिएशन के लिए ऐसा है क्योंकि वो जॉब भी लेना इंपॉर्टेंट है ना सर हाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डोंट हैव जॉब राइट नाउ तो राइट टू 3 एक्सपीरियंस अराउंड 5.5 दिखा दो इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टू गेट द जॉब राइट 5 or 5.2 you have to soak it to the job keep current salary you have see if you tell more like 7-8 because if you have correct experience right you're working in the company you have common designation that you can use then you can say what is current package right but you are going to take experience then I'll suggest you write below 5.5 5.6 or 5.2 something you might because if you write more sometimes I ask you ITR document IT return file right that you cannot show second thing your preferences because you don't have job right now right if you put more salary some company will say okay you have already 7 lakhs 8 lakhs then you need at least 11 to 12 they may not call you with less salary they will call you right अब मैं भी अगर नौकरी में ढूंढने जाता हूँ लड़कों को बंदों को अपनी कंपनी में देखता हूँ सैलरी कितनी हुई सैलरी ऑलरेडी 10 लाख रुपए है तो 12-15 देना पड़ेगा ये रहने बजट से कम है चलो जिनकी 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए फिल्टर करता हूँ उसमें 6 लाख 7 लाख रुपए उसमें 8-9 दे सकें इफ योर सैलरी इज 5 lakhs आई गिव यू 9 lakhs यू विल बी वेरी हैप्पी अरे सैलरी ऑलरेडी 7 lakhs है वो 9 लाख तो इतना हैप्पी नहीं होगा ना वो यस और नो सो वी कीप द फिल्टर बेस्ड ऑन करंट सैलरी आल्सो experience current salary profile skill all are filter parameter less the salary more the calls get in mind so that is the reason people who are higher salary getting less call less salary getting more call so write 0.5 ask expectation around 8 to 9 first offer ले लो 8 to 9 में बोल दो 8 lakhs है ना अगर नेगोशिएट कर दो 7.5 और 8 का ही मिल जाता तो ठीक है initially because initially you don't have job right the first is to get the job second is once you get an offer right you may have time to join or you may join also no problem continue to search if you want looking for more offer right then check you already have offer you may get 9 to 10 or 11 also get another offer you're going to continue to search get you already have ask 13 to 14 also get it? That way you can follow to negotiate further. If you got a job already, started working on the company, right? If you are looking for big offer, you can escort also. भैया ठीक है 10 दिन गया 15 दिन गया भैया नहीं कर पाऊंगा कोई भी फैमिली रीजन आया मेडिकल रीजन आया दिखा दो यू नॉट गेट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिकॉज आप किसी कंपनी के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो ना एंड ऑल्सो देयर आर 10,000 कंपनीज इन इंडिया हु आर हायरिंग साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज आपको एक ही कंपनी में काम करना है ना मे फुल लाइफ यू विल वर्क मोस्टली 5 to 6 कंपनीज 7 कंपनीज विल नॉट वर्क ऑन 10,000 अगर कोई कंपनी ज्वाइन भी कर ली अगर और दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर है 30% 40% हाइक मिल रही है अगर है ना तो बेटर ज्वाइन न्यू कंपनी अब नोटिस पीरियड 3 महीने का हो गया अब छोड़ नहीं सकते तो यू हैव द ऑप्शन टू एक्सकॉन्ड इट इफ यू डू द एक्सकॉन्ड विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट एनीवेज वी डू नॉट रिक्वायर
Get it? It's all about your preference. ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट जॉब के लिए थोड़ा नेगोशिएट चल जाए, 6-7 लाख 8 लाख 7 लाख मिनिमम चाहिए, है ना। इट डिपेंड्स ऑन, इट्स ऑन ऑल योर प्रेफरेंस। अगर आप 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे थे, अगर 6 लाख भी मिल गए तो बहुत है कि नहीं। यू डज नॉट हैव जॉब फॉर लास्ट 5 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स, कोई कंपनी 6 लाख का भी दे रही है तो ठीक है भाई, ले लेते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट वर्किंग गेट सम रियल टाइम एक्सपीरियंस। तो ऑल आवर प्रेफरेंसेस, या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ज़्यादा है, कंपनी चल नहीं पा रहा है, बहुत डिपेंडेंसी है, बहुत प्रेशर है, यू वांट मोर, देन ये ज़्यादा पढ़ो भी, लर्न, because knowledge is the key, right? So more and more knowledge, you will get more offers also. How your interview, because your this package depend on your how was your interview. कोई बंदा नॉर्मल है, बिलो एवरेज, कम सैलरी दूंगा, उसी एक्सपीरियंस में कोई बंदा ज्यादा अच्छा नॉलेज है, उसको ज्यादा पैकेज मिलेगा, है ना। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। I'll be assisting you based on my knowledge, my time, right? So it's all about your effort now. I have helped you to create your foundation. There'll be some question. I'm not committing that 100% same question be coming in, but your foundation has built, right? There'll be some question which we have never discussed here. It's your responsibility now to learn it from Google, YouTube. You can ask people. Some of the frequently asked questions, in case you come across, everybody come across, I may try to cover in the next batch, or maybe I can answer you on the WhatsApp itself, or I may cover it, if it's big thing, I may cover it on the next batch and I can share the video. Get it, mind? So अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे कि वो वेंकटेश जो है हेल्पिंग हैंड, उन्होंने जो कंपनी का दिया तो उसमें मैक्सिमम जो वेबसाइट है उसको ओपन करने पे वार्निंग साइन तो हो रहा है, जैसे हम लोग, मैंने भी मेंशन किया अपने रिज्यूमे में डेटा इनपुट एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड। करेक्ट। सो मैंने ये रेस किया था, ये रेस कंसर्न किया था, मैंने उसके साथ रेस किया था, तो उसने बोला सर आप सब लोग तो यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने ही आपको बोला था कि वार्निंग नहीं आनी चाहिए, है ना। लेकिन जब मैंने उससे कंसर्न किया, एक बंदे ने मुझे फोन करके बोला कि सर सब में आ रहा है वो चीज़, मैंने उससे रेस किया कि आप मैक्सिमम में आपके यही आ रहा है। ही सर सो सर मैं आपको कंपनी से बोलूँगा करने के लिए, लेकिन कोई इशू नहीं आ रहा है उससे। So many people are, he is not working for us only, right? He is working, many people are reaching out to us. He said, sir, we have never faced any challenges for verification and anything. So I believe that we can go ahead with that. I have given my feedback to him to upload the valid certificates on the company's website. But he said like there is no problem. We are doing it since a long time and we have never faced any problem. But I have given the recommendation. Okay? Got it? Okay, so best of luck, right? You have to be very aggressive. LinkedIn profile पूरा करो, apply for the job through LinkedIn, through the post on the timeline. करे पॉइंट, जो जितना एफर्ट लगाएगा पैकेज भी बढ़िया मिलेगा और जॉब भी जल्दी मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks Thank for you, this wonderful sir. Thank you, sir. information, Thank you, sir.